गुड इवनिंग क्लास वेलकम टू एसआर एजुकेशन मु सुधांशु सर आपन सब स्वागत करूची हमर ए मैथ क्लास को प्रीवियस क्लास रे हम सेट रो यूनियन इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंटरी ऑफ सेट ए सब विषय हम डिस्कशन करथिले यूनिवर्सल सेट ऊपर भी हम डिस्कशन करथिले आज रो आउ सिमेट्री डिफरेंस ए सब विषय हम डिस्कशन करथिले आज रो क्लास रे हमें तमर होचे थ्योरम 1 एंड 2 आ सहित सेट रो किछि इंपोर्टेंट एग्जांपल तास को डिस्कशन करिबा जल्दी से फटाफट जोड़ी जातु चलो थ्योरम 1 कोन कहूची ए बी सी तीनटा सेट देला तार को हम चारटा स्टेटमेंट लॉ देला चारटा लॉ देला ताको हम प्रूव करिया पड़िबो जे ए यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी एने को प्रॉपर्टी ना जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का पई ना यूनियन पई ठीक सेमिति एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर इंटरसेक्शन पई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर यूनियन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर इंटरसेक्शन एटा होछ कोन बेसिक चारटा माने चारटा लॉ थ्योरम 1 जोड़ा दैछि हमरा गुटे गुटे करे प्रथम प्रूव करिया जिबा 1 now what I state that A union B union C is equal to A union B union C. We have to prove this statement. Now let X belongs to A union B union C. What we are going to do? We are going to show that X belongs to this, and after our conjugative after our few steps we are going to show that X belongs to this part. Then what will happen? Then A union B union C will be subset of A union B union C, and on next step we will take X belongs to this part A union B union C. We will take X belongs to A union B union C, and we have to show that X belongs to A union B union C. And from equation 1 and 2 we will show that A union B union C is equal to A union B union C. यार माने होची यदि A B रा सबसेट हला आउ B A रा सबसेट हला ताले एटा कोन इंप्लाइज करे ना A इक्वल टू B कोन इंप्लाइज करियो A इक्वल टू B हमें यार साइज नै कि हम एटा को प्रूव करियो हम प्रथम कोन करले we take X belongs to this statement. Now we have to show X is belongs to this statement. Okay, let me erase. Okay, what we have did now, X belongs to A union B union C. That implies X belongs to A union B. Here union represent which logic? Or logic. Union represent or logic. So let's replace it. X belongs to A union B, or X belongs to C. Now open this bracket. Let's consider this part only. Then X belongs to A, and similarly here union represent or logic. Then or X belongs to B, the remaining part as it is, or X belongs to C. Now we have to do what we are going to do. Now we are merging these two statements. That implies X belongs to A, or X belongs to B union C. Why we take union? As we know, union represent or logic. That's why on the basis we replace or to union, and combining these two statements. That implies X belongs to A. Again, now combine X belongs to A statement and X belongs to B union C statement.
just replace OR statement with union. X belongs to A union B union C. And also reverse is also same. That's why we use double implies. That means on first step we take X belongs to this part, and we show that X belongs to this part, and that's why A union B union C, this part is subset of this part. And again on the second part we are prove it by reversing, that is X belongs to A union B union C, and we have to show X belongs to A union B union C with same process. That's why we use double implies. Hence A union B union C is equal to A union B union C. माने जदि आम एटी कौन करें, प्रथम एक्स टाक यही पार्ट ने एक्स टाक कौन यार सबसेट देखा एथिरे यही पार्ट रे एक्स को नवा यार सबसेट देखा देले आमर दुटा इक्वाल हो। तो से प्रूफ सब दी जन सामान आम कौन कले एक्स प्रथम एलएचएस पार्ट ने एलएचएस पार्ट नहीं कौन कले एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी ने देन एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी आम ए यूनियन को खोलदेले यूनियन बदल आम कौन लिखले और लिखले कहीं यूनियन और को रिप्रेजेंट करुच्ची। तो एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी और एक्स बिलोंग्स टू सी पुणी ये जो ब्राकेट अच्छे आपको खोलदेले ब्राकेट तो कौन अच्छी यूनियन साइन अच्छी तो एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू तो एक्स बिलोंग्स टू सी अच्छी तो और एक्स बिलोंग्स टू सी। नेक्स्ट स्टेप आम कौन कले देख एक्स बी रही कि एक्स सी री अच्छी तो हम दुटा कंबाइन करदे तो एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी यूनियन सी ठीक अच्छे और उठे कौन लगे यूनियन लगेदे ठीक सेमती। नेक्स्ट स्टेप रे एटी कौन करबा ना एटी एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी यूनियन सी तो या पुणी कंबाइन करबा केमती और अच्छे और उठे कौन हो यूनियन लगे तो ये एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी तो एम कौन मिलला एथरा मिलला जे ए यूनियन ए जो ए यूनियन एटा ए यूनियन बी यूनियन सी इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी यार सबसेट यदि आम रिभर्स नवा तेणु आम से डबल इम्प्लाइज बारंबार लिखा परिवर्ते आम माने स्टेपटा कौन रिपीट हम रिभर्स मान कौन तल आड़ लिखी गले ऊपर आड़ मिल जाए एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी तो यहाँ पुणी तल आड़ लिखी दियो एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी दैट इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी यूनियन सी दैट इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू सी दैट इम्प्लाइज पुणी तुम नेक्स्ट कौन तुम दुटा कमन नहीं जीव ए दुटा को टुगेदर माने एकाठी करदे एकाठी करदे कंबाइन कले कौन आसो एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी और एक्स बिलोंग्स टू सी दैट इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी माने तो स्टेप सेम बस फास्ट एलएचएस कौन जो एलएच को आरएसएस गले ए प्रोसेस रे गले जो आरएचएस रो एलएच को जीवा रिवर्स प्रोसेस रे लिखि दो जेतु बार बार सेम प्रोसेस रिपीट करिया पड़छ तेणु आमे को डबल एम्प्लॉय चिन्ह व्यवहार कले ताकि हमको आ बार बार लिखा दरकार नहीं। आई प्रूव है नेक्स्ट चलो 2i कौन कहूँ ना ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी सेम प्रोसेस आम एलएचएस नवा एक्स बिलोंग्स टू लेट एलएचएस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी double implies x belongs to a intersection b. Here intersection represent AND logic, that's why here AND intersection उठे देले कौन लगेला AND लगेले and x belongs to c double implies हमें बर्तमान कौन now break this bracket now x belongs to a and x belongs to b. Why we take AND here because the intersection sign represent and intersection sign represent and that's why when we break the bracket we show that x belongs to a and x belongs to
B. Just look the Venn diagram. Here X, here A, here B. This is the intersection part. If any element X belongs to A intersection B, here any element, here is some element X. X belongs to A intersection B. That means X belongs to A, that X belongs to A, and also X belongs to B. Isn't it? So X belongs to A and X belongs to B, and we have part, and rest is same, and X belongs to C. Double implies. Now what we are going to do? As like before, we are combining these two statements. X belongs to B and X belongs to C. Now X belongs to A, and look, when an element X belongs to B, here it is B, here it is C, X belongs to B and X belongs to also C. Then X belongs to what? B intersection C. Then X belongs to B intersection C. Isn't it? Yes. X belongs to B intersection C. Clear? That implies. Now look. X belongs to A and X belongs to X B intersection C. Now what do we do? X belongs to A intersection B intersection C. As we replace and with sign intersection. If we do Venn diagram, then X belongs to A and X belongs to also B intersection C. Look, and X will lies here. X belongs to A, X belongs to A, and also X belongs to B intersection C. Clear? Now, hence, A intersection B intersection C is equal to A intersection B intersection C. Next 3i. 3i कौन कहूँ distributive property A union B intersection C is equal to A intersection B A union B intersection A union C. आम बर्तमान এটা প্রুফ করে রয়েছে। দেখো সেমতি যেমন প্রুফ করে let x belongs to A union B intersection C. ঠিক আছে? That implies ঠিক সেমতি ডবল ইমপ্লাইজ দেব কারণ প্রসেস স্টেপ সেম ଅଛି খালি উল্টেকি লেখা হচ্ছে বাস। That implies x belongs to A union पाई कौन लिखा और लिखेबा और x belongs to B intersection C. That implies x belongs to A or x belongs to B B intersection B intersection C रे माने कौन intersection उठिले A हिजबो तो x belongs to B and intersection उठिले कौन लागिवो and लागिवो and x belongs to C का मु देखै दिली एटा Venn diagram द्वारा एटा B एटा C एलिमेंट 8 अछि intersection रे त माने कौन से एलिमेंट B रे भी अछि आउ से एलिमेंट भी C रे भी अछि that means that element belongs to B and also element belongs to C. That implies x belongs to A or x belongs to B and x belongs to A
और x belongs to c। अच्छा देख এইটা गोटे पार्ट এইটা गोटे पार्ट माने से कुछ x a रे रहइबो किबा x b रे रहइबो एवं c रे रहइबो त हम कोन कले ना x को তাহলে এটা ট্রু হবো নাহলে এটা ট্রু হবো হয় কি নাই তো x belongs to a x तो b रे भी अच्छी ऑलरेडी एन अछि ना कोन b रे भी अच्छी c रे भी अच्छी तो हम x belongs to a और x belongs to b नै नेले आ x belongs to a सहित x belongs to c नै नेले कारण c रे तो रहउछि से कंपलसरी तुम एटी अटा माने एटा गोटे वन टाइप मल्टीप्लिकेशन टाइप रो तुमको देखा देखो जेमति a b plus c केमति रखुछ a b plus a c ठीक सेमति एठी एठी अटा अछि याको हम जस्ट से मल्टीप्लाई कला भलिया एठी कर देले माने कोन x तो a रे अछि x टा a रे अछि किबा एते अछि आइदर वन इज ट्रू होवा दरकार यदि एटा जो ट्रू हुए त एटा फॉल्स हो मे बी फॉल्स मे बी ट्रू हे पारे माने एटा फॉल्स हो फॉल्स तनो x बिलोंग्स टू a त ट्रू तो अछि तो x बिलोंग्स टू a और नेले टू एथर गोटे नेले x बिलोंग्स टू b एवं x बिलोंग्स टू a नेले काटा और पार्ट रो अछि और x बिलोंग्स टू c दैट इंप्लाइज x बिलोंग्स टू a union b and x belongs to a union c that implies x belongs to a union b intersection a union c यार जो वेन डायग्राम तो एते तुमको देखो माने एते गोटे थ्योरम टा मन रखा तुमको तो बुझा कष्ट होई पारे किंतु जदि वेन डायग्राम आकर देखियो बहुत इजी देखो वेन डायग्राम आकर देखो ए बी सी से प्रथम कौन कहितला ना ए यूनियन बी यूनियन सी हम प्रथम ए यूनियन बी यूनियन सी या वेन डायग्राम काटिबा ए यूनियन बी यूनियन सी सॉरी बी इंटरसेक्शन सी ए यूनियन एटा ए ठीक अछि आउ बी इंटरसेक्शन सी कोडा ए पार्टटा एटा कोन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी चित्र को आउथर करो ए बी सी देखो एटा कहा पे करबा हमें ना सेकंड पार्ट पे ए यूनियन बी कहा पे करबा ना ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी प्रथमे ए यूनियन बी एटा कोन ए यूनियन बी एबे देखिया हम कोन ए यूनियन सी देखिबा ए यूनियन सी तो तांको भीतर कॉमन इंटरसेक्शन आंको भीतर कॉमन पार्ट के कोउडा एई तो का पार्ट ही कॉमन हां कि नहीं
ଇଏ ଏତିକି ଆଉ ଇଏ ଏତିକି। ଏଇ ପାର୍ଟ ହିଁ କମନ। ତ ଏ ୟୁନିୟନ ବି ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ସି କଣ ଥିଲା? ଏଟା ଏତିକି ଥିଲା। ଏଠି ଯୋଉ ଏ ୟୁନିୟନ ବି इंटरसेक्शन ए यूनियन सी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ये भी कॉमन अच्छे एरिया, ये भी एरिया कॉमन अच्छी हाँ कि नहीं, ये भी एरिया कॉमन अच्छी। तो देखो ए फिगर आउ ए फिगर दिया समान है कि नहीं, समान। बस जो चित्र भेन डायग्राम भेन प्रथम कौन कहता डेफिनेशन ना कॉम्प्लिकेटेड थ्योरम को आसानी रे माने सहज रे बुझिया साहाय्य करे कि भेन डायग्राम। देखिल केते इजी रे बुझिला, एते स्टेप गोटे दुईटा तीनटा चारटा पांचटा स्टेप लिखिया माने 5 दिन 10टा स्टेप लिखिया परिवर्तन हम गोटे चित्र रे करदेले काम, तीनटा चित्र काम शेष। ठीक अछि, से गला नेक्स्ट हला आईबी। आईबी कोन कहूची ना ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। Let's take x belongs to a intersection b union c बा सेम प्रोसेस जमती करथिले पूर्व थर ना प्रीवियस स्लाइड जमती कले सेमती कर चलिबा। x belongs to a, here union for and x belongs to b union c, sorry ये इंटरसेक्शन सिंबल पाई कोन यूज करे जे ना एंड पाई। Now that implies x belongs to a and x belongs to b और x belongs to c। यूनियन पाई हमें और सिंबल व्यवहार करू, we use union for or sign, is it ठीक? ठीक अछि, तो x belongs to a, x belongs to a and x belongs to b और it is as we have done before, just like that we are doing the same process and just like in same step जेमता पूर्वतर करथिले थर्ड आइडा प्रूव करले एठी हम आईवी रे हम ठीक से प्रूव करिबा। x belongs to a and x belongs to b और x belongs to a and x belongs to c माने एइथिरे ए जो दुईटा रे हम एटा कोन करे मल्टीप्लाई कला वाला करदेले, एटा एइथिले कले देखो एटा गुटे स्टेटमेंट ए टोटल गुटे स्टेटमेंट एठी और अछि x तो a रे तो कंपलसरी रहइबो ताहे तो x b रे रहइबो नले a रे c रे रहइबो, तो x तो a रे रहिला ताहे तो गुटे थरे कोन हबो x b रे रहइबो आउ थरे कोन हबो किबा x तो a रे रहइबो नले c रे रहइबो माने एमती तो कहबार तुमे हेलो a तुमे हेलो x तुमे किए x a होउची कोन माने तम होउची धरने तम ए होउची तम घर, ए होउची कोन ए होउची तम घर, बी होउची तम बड़ मामू घर, सी होउची तम साना मामू घर। तो तम घर तो रहिबो ही रहिबो किंतु कंडीशन कोन बड़ मामू साना मामू तो कथा होनाती तेन तुम तांको घरे एकाठी सन अलग अलग रहउछंती सन कोन बड़ मामू तो बड़ मामू आ साना मामू अलग अलग रहउछंती। तो तुमे गले मामू घर को कोन बेले तुमे बड़ मामू घर रहइबो आ बेले कहा घर रहइबो साना मामू घर रहइबो कि तुमे तो तम घर तो तुम रहउछ ना, तम घर तुम रहउछ तुमे तो फिक्स तम घर छुआ तुमे तने x बिलोंग्स टू a तो फिक्स रहइबो रहइबो तने थरे कोन x बिलोंग्स टू a x बिलोंग्स टू b रहइबो गोटे केस आसीबो किबा आ x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू c जोडी केस आसीबो। तो तम घर तो रहिलो ताहे तो तुम आइदर तुम सानो मामू घर रहइबो
आइदर तुम सान मामू घर रहिल तो एक्स बिलोंग्स टू ए है तुम है एंड एक्स बिलोंग्स टू सी तुम्हें तुम घर तो रोच तेणु एक्स बिलोंग्स टू ए आउ गोटे केस कौन हम और से और लगे और एंड एक्स बिलोंग्स टू बी ना बड़ आम घर ठीक अच्छे तेणु यहाँ कौन यहाँ तुम परिचय जो कहते तुम्हें तुम बापा ना कौन तुम परिचय एक्स बिलोंग्स टू ए तुम कौ घर रोच ठीक सेमती आशा कर बुझीपार जदि न बुझी न हो मत कमेंट सेक्शन में कह मु नेक्स्ट क्लास रे मैं काली जो क्लास नेबी काली क्लास में डाउट क्लियर करदेवी ठीक अच्छे नाउ देखो एक्स ए रे रोची प्लस बी रे भी रोची तेणु एक्स ए इंटरसेक्शन बी रे रहिबो और एक्स बिलोंग्स टू ए रे भी रोची सी रे रोची तेणु ए इंटरसेक्शन सी रे रहिबो देखो एक बर्तमान देखो एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन सी किंबा ए इंटरसेक्शन बी रे रोची ए इंटरसेक्शन बी किंबा ए इंटरसेक्शन सी रे रोची पुणी मजे साइन कौन अच्छी और साइन अच्छी तेणु गोटे और उठी गले कौन लगे यूनियन लगे कौन लगे यूनियन लगे तो एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी hence a intersection b union c is equal to a intersection b union a intersection c क्लियर जदि आम भेन डायग्राम यार करवा देख ए बी सी आम क्या करुचे ना यहाँ हूँ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी करुचे ए बी सी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी प्रथम बी यूनियन सी नहीं नियो ये हूँ बी यूनियन सी मो सहित मार्क कर चलो समस्ते ये कौन बी यूनियन सी आसीगला तुमको बी यूनियन सी सहित ए जो इंटरसेक्शन कर ए अलग कलर नहीं नियो एटा ए हाँ कि नहीं देखा ये कौन ए गला तब देख ए कमन पार्ट कौन मिलला आमको कमन पार्ट मिलला ये देखो हाँ कि नहीं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी रो जो कमन पार्ट मिला तक मिलला कमन पार्ट क्लियर एबे देखो एबे ए इंटरसेक्शन बी आउ ए इंटरसेक्शन सी रो वेन डायग्राम करबा ए बी सी एटा का बाय करूछ हमें ना ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी नाउ ए इंटरसेक्शन बी कलर चेंज कर दियो ए इंटरसेक्शन बी एटा ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी गोटे मिनिट ए इंटरसेक्शन सी कोडा एटा ताको कौन करिया ताको यूनियन जोड़िले तो हम यूनियन साहाଯ୍य जोड़बा एटा पूरा कंप्लीट हो जो ताल कॉमन पार्ट को तो आसला कॉमन पार्ट यही तो कहीं आसला ए यूनियन बी कला पर रिजल्ट आसला नहीं एठी जहाँ आसला एठी से आसला तो दुईटा भेन डायग्राम समान है क्लियर हो पाइल तो आम जो प्रूव कले यहाँ हूँ कौन है ट्रू कौन है ट्रू है
एबे चलो थ्योरम 2 को जीवा। थ्योरम 2 कौन कहूची ना ए बी दिटा सेट, ए बी आर टू सेट, then we have to show that A union B complement is equal to A complement intersection B complement. Now, as we proved before, just like we are going to take x belongs to, let x belongs to, here proof of I part, x belongs to A union B complement. What we have done, we have taken x on this part and we are going to show that x is belongs to this part. And on the reverse process, we are going to take x belongs to this part and we have to show x belongs to this part. Let x belongs to A union B complement. Double implies, let's push double implies because the process, the steps are same in both cases, just in the reverse order. So x belongs, that implies x belongs to, x does not belongs to A union B. Let's look Venn diagram. Here it is A. If any element that not belongs to A, that means if any element not belongs to A, that means x belongs to this area. Here it is universal set U. If any element x does not belongs to A, that means x belongs to universal set minus A, right? What we have done? Now we have removed the element of A, remove the area A, because x does not belongs to A, x does not belongs to A. So what we have done? We remove the area A. The rest part is this, and the element belongs to this part. If any element x does not belongs to A, that means con. That means what? That means x belongs to this part, U minus A part. And by the definition of complement, U minus A is what? A complement. Like that, if x belongs to any one complement, x belongs to A union B complement. That implies x does not belongs to A union B, isn't it? If x belongs to A complement, it implies x does not belongs to A. Like that, x belongs to A union B complement. That implies x belongs to A does not belongs to A union B. That implies x does not belongs to A and x does not belongs to B. Why take and? Maybe you have forgotten there is a formula, that is conjugation of P conjunction Q. So negation of P conjunction Q is equal to negation of P interjection negation of P interjection negation of Q. We are using this formula. Here negation doesn't belongs to, negation means not. So x doesn't belongs to A, x doesn't belongs to A union B. So x does not belongs to negation A union B. That implies x belongs to A, x does not belongs to A, x does not belongs to A, and by हमें कौन use करे? Intersection. We use and, we represent and through intersection, and then negation Q माने x does not belongs to B. एबे देखो x A रे belongs करूनी, x B रे belongs करूनी. That implies यदि x A रे belongs करूनी ताले x belongs to A complement and x belongs to B complement, right? That implies x belongs to A complement intersection B complement. Hence, we prove that A union B complement is equal to A complement intersection B complement. Next चलो 2i part. 2i कौन कहूची ना A intersection B complement is equal to A complement union
B complement. Similarly, let's take X belongs to A intersection B complement. That implies X does not belongs to A intersection B. That implies X does not belongs to A or X does not belongs to B. We use the formula negation of P intersection Q is equal to negation of P conjunction negation of Q. Conjunction represent or and intersection represent and. That implies as X does not belongs to A, that means X belongs to A complement, or as X does not belongs to B, that means X belongs to B complement. Now we remove OR by putting union symbol, then X belongs to A complement union B complement. Hence, we prove that A intersection B complement is equal to A complement union B complement. Clear? Clear ହେଲା? Theorem 2 ହେଇଗଲା। এই ଯୋଉ law ଟାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା, ୟାକୁ ଆମେ କହିବା ଡି ମର୍ଗାନ୍ସ law। କୋଉ law ଟା? ଡି ମର୍ଗାନ୍ସ। ଡି ମର୍ଗାନ୍ସ law। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଉ ୟାର ପୂର୍ବଟା ଯୋଉଟା ଥିଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ। ଏଇ ଦିଟା କଣ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହଉଛି ଏ ବୋଥ ଯୋଉ theorem ଟା theorem 2 ଟା ଏଟା ହଉଛି ଡି ମର୍ଗାନ୍ସ law। କଣ ଏଟା? ଡି ମର୍ଗାନ୍ସ। ଏଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମନେ ରଖିବ। ଡି ମର୍ଗାନ୍ସ law। ଆଚ୍ଛା, ଡି ମର୍ଗାନ୍ସ law କୁ ଆଉ ଏମିତି ବି ଲେଖି ହବ କେମିତି ଦେଖ, A intersection B complement is equal to, we can write the universal set X minus A intersection B is equal to A complement, we can write universal set X minus A union X minus B. Why? Just look at this here. X does not belongs to A, that means X belongs to U minus A. Here the biggest set is universal set. Biggest set of any set is universal set that we represent U or X according to your book, right? So X does not A means X belongs to U minus A. So we use this statement here. So X minus A intersection B is equal to X minus A union X minus B. Clear? ଏବେ ଚାଲ କିଛି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଯିବା। ଦେଖ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ 5। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ 5 କଣ କହୁଛି ନା A ୟୁନିୟନ A intersection B symmetry difference C। symmetry difference କଣ ତା ମାନେ କଣ ନା A symmetric difference B is equal to A difference B union B difference A। A difference B କେମିତି ଲେଖାଯିବ ନା A difference B ଏ କହେ ଯେ X belongs to A, X belongs to A and X does not belongs to B। এটা কাହାର? A symmetry difference union B sorry এটা হচ্ছে A difference B ର ଯୋଉ ଡେଫିନେସନ ଟା। B ସେମିତି B difference A କଣ କହୁଛି ନା X belongs to B and X does not belongs to A। ଯାକୁ ସିମ୍ବଲ ମାଇନସ ଆକାର ଲେଖିବା ତାହେଲେ A minus B union B minus A। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে A symmetry difference B। সে গলা A intersection B symmetry difference C is equal to A intersection B symmetry difference A intersection C। ଯେମିତି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ପ୍ରିଭିୟସଲି ଆମେ ପ୍ରୁଭ କଲେ ଠିକ ସେମିତି we are going to take X belongs to A intersection B symmetry difference C। Now double implies, why take double implies? Because the step are fixed,
बस order are different. If you go left to right, then we follow downward step. If we prove right RHS to LHS, if we prove RHS right hand side to left hand side LHS, then we will follow upward direction step. Okay, clear? If we prove LHS to RHS, LHS to RHS, then we follow downward direction step. That is first one, and second is this one, third this one, fourth this one, and fifth this one, and sixth this one step. If we prove RHS to LHS step, LHS, then we follow upward direction. That is first this step, second this step, third this step, fourth this step, fifth this step, sixth this step. Okay, let x belongs to A and x belongs to B, symmetry difference C. Now x belongs to A and for what? And for intersection sign pi. So as it, we what we have done, we write that basic definition of B symmetry difference C. As I write, x belongs to A symmetry difference means x belongs to A and x does not belongs to B. Union means or. Union means what? Or. You can write it or here or. X belongs to B and x does not belongs to C, or x belongs to C and x does not belongs to B. Right? Now what we have done? We have merged this part with A. X belongs to A and x belongs to B and x belongs to C, and also this part with this part, that is x belongs to A and x belongs to C and x does not belongs to B. Now what happened? Now x belongs to, we use intersection sign for what? For AND logic. Then x belongs to A intersection B and x belongs to x does not belongs to A intersection C. माने कहूची x A रे रहउची B रे भी रहउची किंतु C रे रहउनी. ता माने कोन? x जदि A और B रे A रहउची B रे रहउची तने A और B रे इंटरसेक्शन रहइबो. C रे रहउनी माने कोन? A इंटरसेक्शन C रे भी से रहइबोनी. हम जदि चित्रटा देखिबा एमथि से कहउची x A रे रहउची B रे रहउची किंतु C रे नाही. C रे नाही माने A एरिया मानकर नाही. हां कि नाही? तो x A एरिया B तो A इंटरसेक्शन B रे रहउची. A इंटरसेक्शन B रे तो एटा होउची कोन? ए जो पार्टटा ए पार्टटा A इंटरसेक्शन B जाउची. तने x A इंटरसेक्शन B रे रहउची किंतु जेतु C रे नाही तो A इंटरसेक्शन C रे रहइबोनी. ए जो A इंटरसेक्शन C ए पार्टटा एथरे रहइबोनी. तो सेटा हम लिखि देले. H does not belongs to A intersection C. Similarly, x belongs to A intersection C. जेतु B रे रहउनी तो x does not belongs to A intersection B. क्लियर? तो एबे देखो एटा कहार डेफिनेशन सिमेट्री डिफरेंस रो डेफिनेशन माने A इंटरसेक्शन B रे रहउची किंतु A इंटरसेक्शन C रे रहउनी. एठी A इंटरसेक्शन C रे रहउची किंतु A इंटरसेक्शन B रे रहउनी. तो एटा कोन? A इंटरसेक्शन B सिमेट्री डिफरेंस A इंटरसेक्शन C. क्लियर? एबे कोन करे 2i A intersection B A symmetry difference B is equal to A union B minus A intersection B. माने देखो एटा A एटा B A B A symmetry difference B कोन ना एई तो करिया एई तो करिया या माने कोन टोटल एरिया में कोन जानछि जदि हम टोटल एरिया देखिबा ए टोटलटा कोन A union B एटा कोन A union B हमें कहा काट देछे A intersection B वियोग A intersection B एई तो जदि हम रिमूव कर दबा जोटा के एटा आसीबो ओके ना ता एटा कोन ना A union B minus
ए इंटरसेक्शन बी। तो सेटा देखिले आमे प्रथमे कोन गले एटा जो कहार फॉर्मूला ना जो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी हमको एटा प्रूव करे अछि। सेमती मैं एथर हम कोन राइट हैंड साइड नेले x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी माइनस ए बाय डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी नेले डबल इंप्लाइज x belongs to a union b and x does not belongs to a union b. Sorry, x belongs to a union b and x does not belongs to a intersection b. Clear? That implies x belongs to a union b and x does not belongs to a or x does not belongs to b. को फॉर्मूला यूज होला कारण नेगेशन ऑफ p intersection q is equal to negation of p union conjunction negation of q. এই ফর্মুলা আমি এটি ইউজ করি। तो x does not belongs to a or x does not belongs to b. That implies x belongs to a এটি আমরা ইউনিয়ন উঠে দিলে x belongs to a or x belongs to b and x does not belongs to a or x does not belongs to b. Clear? ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଯେମିତି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରୁଛେ এই a को आंक सहित जोड़िबा आउ थरे b को आंक सहित जोड़िबा को साइन को नेकी ना एठी और साइन को नेकी। तो x belongs to जेମିତି हम करथले a minus b into a plus b याक हम केमिति सॉल्व करथले ना a into a plus b minus b into a plus b एमती याक सॉल्व करथले हो कि नहीं। बस ठीक सेमती का एठी भी ठीक सही प्रोसेस यूज होची। x belongs to a एठी और अछि एठी एंड अछि तो x belongs to a एठी एंड अछि मझिरे एंड x belongs to a or x does not belongs to a or x does not belongs to b मझिरे और थिला तेनो एठी और रहला आउट कैश बनियो कोन बनियो ना x belongs to b and x does not belongs to a or x does not belongs to b माने एटा तो पूरा स्टेटमेंट गोटे एटा गोटे पूरा स्टेटमेंट या सहित आमे ए दिरा को लगै कि केस बनाउछे। ठीक है फर्स्ट केस रे कोन होला ना x belongs to a देखो एटा देखो x belongs to a and x belongs to a and x does not belongs to a and or x does not belongs to b और एटी मझे और साइन अछि तने और लिखिले तो x belongs to b and x belongs to x does not belongs to a or x does not belongs to b. Now x belongs to a and पुणी ए जो स्टेटमेंट हम पाइले एठी एको पुणी खोल देले जो मल्टीप्लाई वाला फार्मूला लो जेंति स्टाइल सेम स्टाइल a into b minus c तो केमति जो ab minus ac ठीक ए फार्मूला स्टाइल एठी हम लिखिबा बर्तन x belongs to a and x does not belongs to b or x belongs to b and x does not belongs to a. Clear? तो देखो that implies x belongs to a difference b or x belongs to b difference a. एठी हम कोन कले देखो ए लाइन रो हमें x belongs to a माने एटा को मु लिखै दिया आगो गोटे मिनिट लिखै तो तुम क्लियर जान पड़ जियो गोटे मिनिट देखो ए लाइनटा आसिला कोठु एटा देखो x belongs to a एटा आउ कोन कहला एंड x a रे रहउनी कि b रे रहउनी हम कोन कहला ना x belongs to a अछि तने x a तो रहबोनी कि एटा पॉसिबल नो तने कोन नेले ना x does not belongs to b नेले एठी से देखो एठी x तो b रे अछि कंपलसरी एटा एंड ऑफ पुनी एंड स्टेटमेंट एठी अछि तो एटा तो कंपलसरी एटा x belongs to b रहइबो
तो आम एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी हेनी तेना एटा को नबानी एटा फॉल्स हो एक्स रही कौटी एक्स डज नॉट बी आम एटा को नबा तो ये एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए दैट इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए डिफरेंस बी ए रोज बी रे रोनी ताने कोन ए डिफरेंस बी एठी बी रे रोची ए रे रोनी ताने बी डिफरेंस ए दैट इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए डिफरेंस बी यूनियन जेतु और अछि और पय कोन लगा यूनियन लगेबा यूनियन बी डिफरेंस ए जोडा कोन ए सिमिलर डिफरेंस बी क्लियर नेक्स्ट चलो एग्जांपल 6 एटा सेमती बहुत इजी प्रूफ अछि कहला ए डिफरेंस बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए डिफरेंस बी यूनियन सी एक्स को तुम कौन कर ए डिफरेंस बी यूनियन सी रे नै नियो या माने होची कोन एक्स एथरे अछि किंतु एथरे रहबनी तो एक्स बिलोंग्स टू ए हे गला एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी यूनियन सी हे गला तो एक्स बिलोंग्स टू ए एंड ये जो नेगेशन ऑफ जो फार्मूला नेगेशन ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू नेगेशन ऑफ पी इंटरसेक्शन नेगेशन ऑफ क्यू ठीक है ठीक सेमती का एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी यूनियन सी एटा कोन डज नॉट बिलोंग्स टू बी यूनियन सी कंजक्शन पाई यूनियन इज इक्वल टू डज नॉट बिलोंग्स टू बी एंड लागिवो इंटरसेक्शन पाई एंड लागिवो डज नॉट बिलोंग्स टू सी ए स्टेप डी यूज होला and x does not belongs to b and x does not belongs to c that implies x belongs to a एक याको या सदस्य व्यवहार कर गोटे स्टेटमेंट बनेले याको कारण सब जगह ट्रू ना तीनटा जगह ट्रू माने मोर कहया कथा ए वेन डायग्राम देखो ए बी सी माने एलिमेंट सबुथिरे अछि माने तुम एमिति भाबो कि एलिमेंट सबुथिरे अछि तो मु याको या कॉमन कर लिखिया जा याको या कॉमन कर लिखिया सिया एलिमेंट सबुथिरे अछि ना तो सेम तो कला में x belongs to a and x does not belongs to b या कौन कले गुटे कर देले माने एकाठी कर देले आउ x does not belongs to c कौन कले बाहर रख देले एबे देखो x belongs to a and x does not belongs to b ते माने कोन a डिफरेंस b जोटा के एडियाला a डिफरेंस b ताहे तो कोन थिला हमर x does not belongs to c तो पुनी देखो x a डिफरेंस b रे रहउची किंतु c रे रहउनी त माने कोन a डिफरेंस b डिफरेंस c hence a difference b union c is equal to a difference b union c to eta same dia prove habo x belongs to a union b sorry x belongs to a intersection b difference c is equal to तो कोन देखिया पड़िबो ना अछि एटा कोन हे जिवो ना a intersection b difference c तो कोटा देखिया पड़िबो माने a difference b 2 आर कोन कहथिला 2i देखो सेकंड स्टेटमेंट कोन कहउछ ना a intersection b difference c is equal to a difference b sorry a intersection b difference c is equal to a intersection b difference c हमको एटा प्रूव करे अछि देखो हमें कोन कहले x को नेले a इंटरसेक्शन b डिफरेंस c ने नेले हमको देखिया पड़िबो ना a इंटरसेक्शन b डिफरेंस c देखिया पड़िबो x टा या भीतर होची तो x बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन पाई कोन a रहइबो x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b कारण x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b एरा यार जो जनरल डेफिनेशन डिफरेंस माने कोन c रे रहइबोनी तो एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू c दैट इंप्लाइज x बिलोंग्स टू a हमें एटा को एकाठी कर देले x belongs to b and x belongs to sorry x does not belongs to c that implies x belongs to a intersection एटी एंड अछि कोन इंटरसेक्शन रहइला आ b रे रहउची कि c रे रहउनी त b डिफरेंस c प्रूव होला बस खाली जस्ट खाली ट्रिक रे खेलो तुमको वेन डायग्राम बनेर अछि आ वेन डायग्राम हिसाब से तुमको प्रॉब्लम सॉल्व करे अछि ठीक अछि आ एग्जांपल 7 तमते तो इंपोर्टेंट नाही एटा परीक्षा रे आसीबोनी फिर भी तुम देखिनो बहुत इजी अछि एटा देखो कौन कही बी गोटे सेट यूनियन ऑफ एआई यूनियन ऑफ एआई यूनियन ऑफ एआई माने होची यूनियन ऑफ एआई
माने होची A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन एंड सो ऑन एमती का हला। तो बी डिफरेंस कोई बी रो अच्छी माने आउ यूनियन नाही तार माने इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ बी डिफरेंस AI माने यार माने जा माने बी रु पूरा यूनियन को फेडिबा जहा गोटे गोटे करी बी माइनस A1 बी माइनस A2 बी माइनस A3 एटा बाहर कर सेमान को इंटरसेक्शन होबा सेया सेमान को इंटरसेक्शन होबा सेया से कथा कहूची दादा बी रे अछि देमती देखो देखो माने मु कहया था एटा जो सबसे बड़ सेट बी A1 A2 A3 A4 एमती का तो बी रु एकाथरे AI एरा जो AI फेडिया जहा बी माइनस ए छोट सब छोट एलिमेंट बी माइनस सेकेंड टा थर्ड टा एम सब जाक करी ता यूनियन नबा यूनियन हेले भी से ए आसीबो लास्ट आसीबो हां कि नहीं समस्त कमन कोन माने सबटु बड़ समस्त माने डिफरेंस कर साला पर जो यूनियन जो इंटरेक्शन सॉरी भूल कह देली आमे प्रथम कोन गले देखो एटा होची यूनियन ऑफ एआई जब बी रु यूनियन ऑफ एआई बाहर कर ताले रहइबो कोन ए एरिया रहइबो हां कि नहीं किंतु एटा कहा समान हबो ना बी माइनस छोटो सेट बी माइनस छोटो सेट त माने पूरा एरिया टा बी माइनस पुनी ए सेट टा ये पूरा एरिया टा बी माइनस ए सेट टा ता ऊपर सेट तो इटा ए सेट टा देखो माने थोड़ा आसला एटा आउ थोड़ा आसला ए एरिया आउ थोड़ा आसला ए एरिया एम सब एरिया कोन कम कम आसो माने कर सब एटा सब बड़ सेट बड़ एआई तो लास्ट एरिया कोन एति बंचियो बी माइनस ए जो बड़ ए तो ताको दे कॉमन नेले जो इंटरसेक्शन नबा तो लास्ट को एरिया एति एरिया रहइबो ए एरिया रहइबो जो एरिया आसला कोठु ना बी माइनस यूनियन ऑफ एआई तेणु बी माइनस यूनियन ऑफ एआई इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ बी माइनस एआई बस एटा हम प्रूव करिया पड़िबो हमें कोन कहले ना x belongs to b minus union of ai that implies x belongs to b and x does not belongs to union of ai that implies x belongs to b that implies sorry x belongs to b and x does not belongs to ai for each I जदि i मान को माने a सेट जदि यूनियन ए समस्त यूनियन कोन सब बड़ सेट आसी जिवो यूनियन नेले सब बड़ सेट आसी जिवो जदि यूनियन भीतर रहउनी ता माने x टा कोनोसी a रे रहउनी ता माने कोन x टा कोनोसी a रे रहउनी तर i जहा हितो i इक्वल टू कते i इक्वल टू 1 2 3 एम जहा ता हितो जदि x टा यूनियन भीतर रहउनी माने सेट मान को समूह रे जदि रहउनी ताले इंडिविजुअल सेट भी रहइबनी दैट इंप्लाइज x belongs to b minus ai for each I यदि x belongs to b minus ai तने x कोड रहइबो एम तो असंख्य ना b minus a1 अछि एटा आछला b ये आछला a1 पुनी b a2 आसीबो एमती असंख्य आसीबो आई 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 तो सेमती किछि मेंशन करनी तो x belongs to कोन हबो जेतु x b minus ai रे अछि एमती आई अधिक एमती एटा को केस b minus a2 b minus a3 b minus a4 हमें जानने कोथि अछि तना सब x टा कोड रहबो तांकर इंटरसेक्शन पार्ट रे x टा होछ रहबो तने x belongs to intersection of b minus ai क्लियर एतरा कुछ नाही कार्डिनलिटी देखो जेमती कार्डिनलिटी फार्मूला तुमको मु कहि देबी नेक्स्ट सेट कार्डिनलिटी ऑफ फाइनाइट सेट कार्डिनलिटी कोन द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए सेट इफ a equal to 1 2 3 then cardinality of a is equal to 3 ठीक अछि cardinality of a finite set is equal to number of element in that set clear
एबे देखो एटा फॉर्मूला ए यूनियन बी कार्डिनालिटी इज इक्वल टू ए कार्डिनालिटी प्लस बी कार्डिनालिटी ये केतेबेले जेतेबेले ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 माने चित्रटा एमिति थिबो ता कोनोसी कॉमन एलिमेंट नथिबो सेतेबेले ए यूनियन बी रो कार्डिनालिटी केते हिजबो ना ए रो कार्डिनालिटी प्लस बी रो कार्डिनालिटी माने करो जेटा दी कॉमन न माने कॉमन ए पर्सन रहिला सेतेबेले ए यूनियन बी रो फॉर्मूला कोन हबो ना ए यूनियन बी रो कार्डिनालिटी इज इक्वल टू ए कार्डिनालिटी प्लस बी कार्डिनालिटी माइनस ए इंटरसेक्शन बी रो कार्डिनालिटी माइनस ए इंटरसेक्शन बी रो कार्डिनालिटी क्लियर आगु चलिबा याकु नै कि किछि एग्जांपल अछि देखो कोन एग्जांपल सपोज दैट से क्लास कंसिस्ट ऑफ सेट s upon 100 student क्लास से केते पिला अछि 70 माने 100 पिला अछंती 70 जण कोन कोन करछंती ना ज्योमेट्री रे पास करछंती केते ये ज्योमेट्री 60 जण कोथि पास करछन अलजेब्रा पास करछंती 60 जण कोथले अलजेब्रा ठीक अछि इफ नो वन फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट यदि केही बोथ सब्जेक्ट फेल हेनांती माने केही बोथ सब माने कोन कोन दीरा सेट रे केही फेल हेनांती कैन वी डिटरमाइन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन बोथ अलजेब्रा और ज्योमेट्री से पचला तले से हम कोन पचला इंटरसेक्शन वाला पचारुची से को जे कोनोसी पिला फेल हेनांती तले एभली पिला बाहर करो जे कि बोथ ज्योमेट्री और अलजेब्रा पास करथिबो तमे से कॉमन पार्ट पचला तो ए हमें कोन जानचे ए यूनियन बी रो कार्डिनालिटी इज इक्वल टू ए कार्डिनालिटी प्लस बी कार्डिनालिटी माइनस ए इंटरसेक्शन बी रो कार्डिनालिटी दैट इंप्लाइज ए यूनियन बी हम पर केते अछि 100 क्लास रो स्ट्रेंथ जोड़ा 100 इज इक्वल टू ए रो स्ट्रेंथ ज्योमेट्री केते पास करछन 70 प्लस अलजेब्रा केते पास करछन 60 माइनस ए इंटरसेक्शन बी दैट इंप्लाइज एटा 100 रा एपट नै आसो 7 को 13 130 माइनस 100 इज इक्वल केते ए इंटरसेक्शन बी रो कार्डिनालिटी तो एटा केते आसी जो इज इक्वल केते 30 आसी जो आंसर केते आसी 30 तो 30 जण पिला जे कि पास करछन कोथरे बोथ सब्जेक्ट रे पास करछन आज पे आती कि नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 2 2 बी करबा टिल देन टेक केयर थैंक यू